Let's start. Our today's reading passage is a significant development in mining industry. Mining means कानूनी यानी कि mining की safety में एक अहम development. So in this passage we have 5 sections A, B, C, and on the other page we have D and F, and we have to match the headings in this video. And first of all we have to read and understand the headings. So in the list of headings, heading number 1 is a controversy over two versions of an invention. A controversy means discussion or argument. A controversy over two versions of an invention. So the key word is an invention, यानी कि एक इजाद के दो वर्जन्स पर आर्गुमेंट्स या डिस्कशंस. So controversy is a keyword, two versions are the keyword, and an invention is a keyword. It means that in this section we are going to read about the two versions of one invention, and there is also a controversy about the two versions of that one invention. Heading number 2, the need to mine deeper for good quality coal. The need to mine deeper, कि हमें जो माइनिंग है वो गहरी करनी चाहिए फॉर गुड क्वालिटी कोल, अच्छे मेयार का कोयला हासिल करने के लिए. So good quality coal is a keyword and need to mine deeper are also the keywords. Heading number 3, growing awareness of the need to improve conditions for miners. Growing awareness means that the public has got the awareness about the mining industry, about the change in the mining industry, and need to improve conditions for the miners, के माइनर्स के जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत के बारे में आवाम के अंदर बढ़ती हुई आगाही. Heading number 4, a new danger. A new danger is a keyword, so it means that there will be a danger. One type of danger is mentioned in any section caused by developments in mining, जो खतरा माइनिंग में डेवलपमेंट की वजह से पैदा हुआ है. Heading number 5, the impact of poor air quality in mines on miners' health. So the impact of poor air quality is a keyword, and on miners' health are also the keywords. Heading number 6, early attempts to provide lighting without flames. Early attempts यानी कि इब्तदाई जो कोशिशें हैं to provide lighting मुहैया करने के लिए without flames के बगैर. So without flames means a flame which is naked flame, or a flame without any screen, something like that. Heading number 7, a demand by miners for new technology. नई टेक्नोलॉजी के लिए माइनर्स की डिमांड. New technology or demand are the keywords. Heading number 8, a person. It means that there will be a person. There will be a name of the person. Name of the person will be mentioned in any section. Whose work never received full recognition. जिसके काम ने कभी भी मुकम्मल शनाख्त या पहचान हासिल नहीं की. That he did not get fame fully through his work. So these are the headings, and let's read these sections and try to match each section with appropriate heading. So section A, coal has been used as source of fuel for over 5,000 years, but for most of that time it was probably gathered from
places where it was exposed on the surface of the ground, यानी कि कोयला जो है वो तकरीबन 5000 साल पहले से ही फ्यूल का एक के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता था, बट फॉर मोस्ट ऑफ दैट टाइम इट वाज प्रोबेबली गैदर्ड फ्रॉम प्लेसेस, ज़्यादातर ये उन जगहों से हासिल किया जाता था वेयर इट वाज एक्सपोज ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जहाँ पर ये ज़मीन की सतह पर पड़ा हुआ होता था। इट इज़ पॉसिबल दैट द रूमर्स अंडरटुक सम माइनिंग, यह मुमकिन है कि रूम से तल्लक रखने वाले लोगों ने कुछ माइनिंग की होगी, बट कोल माइंस अक्रॉस यूरोप लार्जली डेट फ्रॉम द 13th सेंचुरी, लेकिन यूरोप में जो कोल माइंस थी ना वो तकरीबन 13वीं सदी में शुरू हुई। देयर आफ्टर कोल प्रोडक्शन इंक्रीज स्टेडली, इस तरह कोल प्रोडक्शन ऐसा ऐसा उसमें इजाफा होना शुरू हुआ, एंड इट ग्रेजुअली रिप्लेस चारकोल एंड वुड, और इसने ऐसा ऐसा चारकोल और लकड़ी की जगह ले ली एज ए सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीट और एनर्जी के ज़रिए के तौर पर। तो इस तरह जो पहला पैराग्राफ है सेक्शन ए का, इसमें हमने ये पढ़ा कि 5000 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले की बात है कि कोयला जो है वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। फिर हमने इसमें की वर्ड ये पढ़े कि कोयला उस दौर में जो था वो ज़मीन की सतह पर पड़ा हुआ लोगों को मिलता था, और फिर हमने ये पढ़ा कि जो माइनिंग का काम है वो सबसे पहले रूमियों ने शुरू किया, या रूम से तलक रखने वाले लोगों ने शुरू किया, और यूरोप में तकरीबन 13वीं सदी में कोल माइनिंग स्टार्ट हुई। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो कोल प्रोडक्शन है इसमें आस्ता आस्ता इजाफा हुआ, और कोयले ने चारकोल और लकड़ी की जगह ले ली हरारत और एनर्जी के ज़रिए के तौर पर। अब जो इधर जो हेडिंग्स हैं इनमें किसी जगह भी ये हेडिंग नहीं है कि हु डिड स्टार्ट दी कोल माइनिंग, तो अगर इस तरह का कोई हेडिंग हो तो इट मीन्स उसमें रूमर्स लिखा हुआ है कि रूमियों ने सबसे पहले शुरू की है, तो फिर वो हेडिंग इसके साथ मैच होगी। और इसमें जनाब ये भी नहीं लिखा हुआ कि यूरोप में किस सदी में जो है वो कोल माइनिंग का आगाज़ हुआ, हेडिंग में से कोई भी ऐसी हेडिंग नहीं है, तो इट मीन्स जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ किसी हेडिंग के साथ मैच नहीं करेगा सेक्शन ए का। अब हमने सेक्शन ए का दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। इनिशियली कोल माइंस वर फेयरली शैलो, शुरू में जो कोल माइंस थी ना वो इतनी गहरी नहीं थी, बट दे क्विकली रीच द पॉइंट वेयर आर्टिफिशियल लाइटिंग वाज नेसेसरी, लेकिन जल्दी वो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गई जहां पर मसनूई रोशनी की ज़रूरत पड़ी थी। एट फर्स्ट लाइट्स यूज्ड would have been no different from those used domestically, सबसे पहले जो लाइटें माइनिंग में इस्तेमाल होना शुरू हुई वो उन लाइटों से जो घरेलू पैमाने पर इस्तेमाल होती थी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी, कैंडल्स एंड सिंपल ऑयल लैम्प्स। बट एज कोल माइंस बिकेम डीपर, लेकिन जो जो कोल माइंस जो थी वो गहरी होती गई, इट मीन्स द कोल माइंस गॉट द डेवलपमेंट। Miners encountered a new and terrible problem, तो कारकुनों को एक नए और ख़तरनाक मसले का सामना करना पड़ा। सो इट मीन्स इट इज़ अ डेंजर। A new is a keyword, terrible problem is a keyword. Fire damp, this was a natural gas, ये कुदरती गैस, यानी fire damp means it's a natural gas, principally consisting of methane that exploded on contact with a naked flame. The first known major fire damp explosion, which killed 99 people, took place in Belgium in 1514, and as new technology was used to mine at increasing deep levels, the problem got worse. So these are the keywords. Miners encountered a new and terrible problem. So these words refers to a new danger, and that danger is the fire damp. It's a natural gas, and due to the fire damp or the natural gas, the explosions may happen into the mines. So it means that we can read the headings now and try to match one of them. A controversy over two versions of invention? No. The need to mine deeper for good quality coal? No. Growing awareness of the need to improve conditions for miners? No. A new danger caused by developments in mining? This is the right heading for question number 28, and we can write Roman 4 in front of question number 28, and we can cross heading number 4. A new danger caused by developments in mining. So the new danger is the
miners encountered a new and terrible problem, fire damp. So fire damp is a new danger, and it is a natural gas. So due to this natural gas, fire damp explosions may happen. So our right heading for section A is heading number 4. We can cross it and we can write the Roman 4 in question number 28. Section B. The simplest solution was to improve the ventilation of the mine. यानी सबसे सादा तरीन जो हल ये था कि माइन के अंदर जो ventilation system है उसको बेहतर बनाया जाए. Many mines had only one shaft. So shaft refers to the ventilation system, हवा का निज़ाम, leading from the surface down to the working area below. Ventilation could be improved to some extent by dividing this into a downcast, bring in fresh air, and an upcast, returning foul air and fire damp to the surface. So the first paragraph of section B is about the ventilation, and on the other hand, on the headings we don't have any kind of heading related to the ventilation system. So it means that after reading the first paragraph of B section we can't match any heading with it. We have to read further. But what was really needed was a safe lamp. यानी कि हमें जिस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी वो एक सेफ लैम्प था, मीन्स लाइट दैट कुड नॉट इग्नेट फायर डैम्प, जो कि फायर डैम्प यानी कि गैस को भड़का ना सके. दी अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी लाइटिंग, यानी इब्तदाई दौर में जो सेफ्टी लाइटिंग के लिए कोशिशें थी. सो अर्लीस्ट मीन्स इब्तदाई दौर में, फॉर्म्स मीन्स अटेम्प्ट्स, कि इब्तदाई दौर में जो लाइटिंग के लिए कोशिशें थी. सॉट टू प्रोड्यूस लाइट, उसमें एक ऐसी लाइट जो थी वो पैदा करना या बनाना मकसूद था, विदाउट यूजिंग ए नेकेड फ्लेम, जिसमें हम कोई शोला इस्तेमाल ना करें. सो नेकेड फ्लेम मीन्स फ्लेम that doesn't have any kind of cover or doesn't have any kind of glass or any kind of mesh around it. So that's called the naked flame. So it means that we can match the heading with B section after reading the line. The earliest forms of safety lighting soft to produce light without using a naked flame. इब्तदाई दौर में जो लाइटिंग, सेफ्टी लाइटिंग के लिए जो कोशिशें की गई थी, उन कोशिशों का मकसद ये था कि हम नेकेड फ्लेम या शोले के बगैर ही क्या कर लें, लाइट पैदा कर लें. Only early method try to utilize the fact that skins removed from decaying fish contain the element phosphorus, which emit light in form of phosphorescence. So these are the main lines. So a controversy over two versions of an invention, no. The need to mine deeper for good quality coal, no. Growing awareness of the need to improve conditions of miners, no. The impact of poor air quality in mines on miners' health, no. And heading number 6, early attempts. The early attempts refers to the word earliest forms to provide lighting without flames, के इब्तदाई दौर की कोशिशें जिनमें शोले के बगैर ही रोशनी मुहैया करना मकसद था. So without flames means without using a naked flame. So we can write Roman 6 in front of question number 29. Section C. By about 1810 the problem was becoming acute. 1810 तक ये मसला बहुत ज़्यादा संगीन होता गया. And in some cases there was no alternative to working in the dark. और बस ऐसे मामलात पेश आए कि अंधेरे के सिवाय काम करना मुमकिन नहीं था. यानी कि गैस की वजह से जो माइनर्स थे वो कान के अंदर लाइटिंग नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उन्हें अंधेरे में ही काम करना पड़ता था. Some mines were being closed to stop production. कुछ जो माइंस थी ना उनको मजबूरन बंद करवाना पड़ा, पैदावार भी इस तरह उसकी रुक गई. With serious economic consequences for mine owners and local communities, जिसकी वजह से माइन ओनर्स और जो मकामी लोग थे ना उनकी ज़िंदगियों पर
जो माशी असरात थे वो बहुत बुरे पड़े। The general response, however, was to keep going and reluctantly accept the inevitable death from ignition of fire damp as regrettable. कि जो आम लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि वो काम को जारी रखें, यानी कि माइंस में काम करते रहें, और वो हिचकिचाते हुए फायर डैम की वजह से जो नागजीर मौतें थी ना उनको भी कबूल करने के लिए तैयार थे एज ए रिग्रेटेबल, जो कि काबिल अफसोस बात थी, बट नॉट स्पेशली रिमार्केबल, ये कोई इतनी काबिल तारीफ बात नहीं थी। कंसिक्वेंस ऑफ कोल माइनिंग। तो इस तरह इस सेक्शन के जो फर्स्ट पैराग्राफ है सी सेक्शन, उसमें हमने ये पढ़ा कि 1810 में ये मसला बहुत ज़्यादा शदीद नोयत का हो गया, और फिर जो था वो कानूनों के पास अंधेरे में कानून के अंदर काम करने के अलावा कोई मुतबादल हल भी नहीं था। कुछ कानून को मजबूरन जो था वो बंद करना पड़ा, उनको पैदावार रोकनी पड़ी, जिसका जनाब जो माइन ओनर्स थे और लोकल जो कम्युनिटी थी उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर भी पड़ा। और जो आम लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने हिचकिचाते हुए इस नागज़ीर मौत को कबूल कर लिया था और उन्होंने काम को जारी रखा, जो कि काबिल अफसोस बात थी। तो अब जो आगे वाला इसका पैरा है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा राइट हेडिंग को मैच करने के लिए। The miners themselves could do little, they were largely illiterate। जो माइनर्स थे ना वो बहुत ही कम कुछ इस सिलसिले में कर सकते थे। दे वर लार्ज इलिटरेट, वो ज़्यादातर अनपढ़ थे, एंड डिपेंडेड ऑन द माइन ओनर्स फॉर लाइवलीहुड, वो रोजी कमाने के लिए माइन ओनर्स पर ही भरोसा करते थे। हाउएवर द क्लरिकल, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस वर बिगिनिंग टू टेक नोटिस, यानी कि दफ्तरों में काम करने वाले लोग, जो डॉक्टर थे और कानून के शोबे से तरफ रखने वाले जो लोग थे ना, वर बिगिनिंग टू टेक नोटिस, उन्होंने इस बात का नोटिस लेना शुरू किया, यानी कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाना शुरू की। इट मीन्स दिस सेक्शन रेफर्स टू द ग्रोइंग अवेयरनेस, कि पब्लिक में अवेयरनेस आना शुरू हो गई माइंस की कंडीशंस के बारे में। So we can say after 92 men and boys were killed in 1812 by an explosion of felling colony in northern England, several professional people took action। पेशवार जो या मुख्तलिफ जो पेशों से तल्लुक़ रखने वाले लोग थे टुक एक्शन, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। एंड सोसाइटी वाज सेट अप, और एक तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई टू रेज फंड्स, के वो चंदे इकट्ठे करे फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ लाइटिंग एंड वेंटिलेटिंग माइंस, ताकि माइंस के अंदर लाइटिंग और वेंटिलेशन के जो नए मेथड्स हैं उनको मुतारफ करवाने के लिए। So it means this section refers to the growing awareness of the public। So we can match the heading number 3, growing awareness of the need to improve conditions of the miners। So we can cross it and we can write Roman 3 in front of question number 30। Next paragraph is section D। As the leading chemist of the day and an expert on gases, Sir Humphrey Davy was a natural choice for whom to seek help। यानी सर हैम्फ्रे डेवे जो था वो एक एक्सपर्ट था गैसों का, एक कीमियादान था, और उससे हमने मदद लेनी थी इस मसले को हल करने के लिए, गैसेस को ख़त्म करने के मसले को हल करने के लिए। He was approached by the society in 1815। जो सोसाइटी बनाई गई थी जिसका जिक्र सी सेक्शन में किया गया है, उस सोसाइटी या उस तंजीम ने उस तक अप्रोच की 1815 में। एंड द जनरल बिलीफ नाउ डेज इज दैट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट माइनर्स सेफ्टी लैंप। एक आम ख्याल आज के दौर में ये है कि वो पहले माइनर सेफ्टी लैंप का मौजूद है, उसने सबसे पहले माइनर सेफ्टी लैंप बनाया है। किसने? सर हैम्फ्रे डेवी ने। In which the flame was enclosed by a mesh screen containing very small holes. Air could enter the lamp through the holes, but they were too small to allow the flame of the lamp to pass through them and ignite any fire damp present in the mine tunnels। Davy presented a paper describing the lamp in November 1815। डेवे ने इस लैंप की डिस्क्रिप्शन के बारे में एक पेपर को प्रेजेंट किया है, पेपर शाया किया नवंबर 1815 में। एंड इट वाज ट्रायल्ड इन जनवरी 1816, और 1816 में इस लैंप की आजमाइशी पैमाने पर चेक किया गया। हाउएवर अ फ्यू वीक्स प्रायर टू डेवीज
प्रेजेंटेशन, डेविस की प्रेजेंटेशन के चंद हफ्ते पहले एन इंजीनियर कॉल्ड जॉर्ज स्टेफसन हैड इंडिपेंडेंटली डिजाइंड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अ लैंप के एक इंजीनियर जॉर्ज स्टेफसन ने अपनी मदद आप एक लैंप को डिजाइन किया और उसका तजर्बा किया बेस्ड ऑन द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि उन्हीं साइंसी असूलों पर बनाया गया था। यानी इट मींस द लैंप इज अ इन्वेंशन, टू पीपल इन्वेंटेड वन थिंग after much discussion and argument. So discussion and argument refers to the controversy. He was eventually recognized as deserving equal credit. यानी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और आर्गूमेंट के बाद आखिरकार जॉर्ज स्टेफसन को भी मसावी सतह पर उसकी दरियाफ्त पर क्या दिया गया, उसको क्रेडिट दिया गया। सो दिस पैराग्राफ रेफर्स टू वन काइंड ऑफ इन्वेंशन and about its two versions and a controversy. Discussion and argument refers to the controversy. So we can say, we can match heading number 1, a controversy over two versions of an invention, and we can write Roman 1 in front of question number 31. E section. But in fact, the real inventor of the safety lamp was a man called Dr. William Reid Clenny. लेकिन हकीकत में सेफ्टी लैम्प का जो असल मौजूद था वो डॉक्टर विलियम रेड क्लेनी था, who in 1813 had been awarded a silver medal by the Royal Society of Arts, Manufacturers and Commerce for his own version of a safety lamp, जिसको अपने सेफ्टी लैम्प के वर्जन पर रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, मैन्युफैक्चर और कॉमर्स ने सिल्वर मेडल भी दिया था। क्लेनीज फर्स्ट लैम्प डिड नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द ऑर्डिनरी वर्किंग माइनर्स एज इट वाज रैदर हैवी एंड कम्बरसम। क्लेनी का जो पहला लैम्प था ना, वो वर्किंग माइनर्स की ज़रूरियात को पूरा ना कर सका क्योंकि ये काफ़ी भारी भरकम था। बट रैदर देन सीकिंग अ ग्लोरी इन हिज अचीवमेंट, लेकिन बजाय इसके कि अपनी इस कामयाबी पर वो शोहरत कमाता, ही रिकॉग्नाइजेस डेफिशिएंसीज, उसने इसकी खामियों का अंदाज़ा लगा लिया, उसने खामियों की शनाख्त कर ली, एंड कंटिन्यू टू वर्क टू इम्प्रूव इट, और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए उसने काम जारी रखा। एज वेल एज शेयरिंग हिज नॉलेज टू अदर्स, और अपना इल्म दूसरों तक शेयर भी करता रहा। जॉर्ज स्टेफसन एक्नॉलेज्ड अ डेट टू क्लेनीज रिसर्च, जॉर्ज स्टेफसन ने भी क्लेनी की तहकीक पर उसको क्रेडिट दिया। Humphrey Davy visited him in 1815 shortly before completing the design for his own safety lamp. Humphrey Davy भी 1815 में अपने सेफ्टी लैंप के डिज़ाइन को मुकम्मल करने के बाद उसे मिलने के लिए गया। बट टू दिस डे, आज के दिन तक, आज के दौर तक, डॉक्टर क्लेनी रिमेन्स अ फॉरगेटन हीरो। डॉक्टर क्लेनी जो है वो एक ऐसा हीरो है जिसको कोई भी नहीं जानता, उसको भुला दिया गया है। सो इट मीन्स that this section refers to a person, the name of the person is Dr. Clenny, and nobody knows about his work or about his invention. So it means Dr. Clenny didn't get any kind of recognition from the public. So it means that we can match the heading number 8, a person whose work never received full recognition. We can cross the heading number 8 and we can write Roman 8 in front of section E.